हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गवर्नमेंट 360। गवर्नमेंट 360 में आपનું हार्दिक स्वागत है। जो मित्रों अमरी चैनल ने तमे लाइक शेर एंड सब्सक्राइब न करी हो तो खास करीने सब्सक्राइब करी लेजो, केम के अमरा विडियो तमने समयसर मळता रहे। अत्यारे आपणे समासनो लेक्चर नंबर 5 में आव्या छीए। आना पहला आपणे बे समास पूर्ण कर्या छे, तो फटाक दईने एनुं रिविजन कर दीए कि बे समास कया कया जोया था। एक तो आपणे जोयो तो द्वंद्व समास अने बीजो जोयो तो द्विगु समास। कया बे समास जोया था मित्रों? द्वंद्व समास अने द्विगु समास। द्वंद्व समास में समासनी अंदर पेटा प्रकार 3 पड़े छे। समुच्चय के इतरेचर वाचक द्वंद्व समास, वैकल्पिक द्वंद्व समास अने समाहार द्वंद्व समास। जे शब्दनो विग्रह अनेथी थतो होय, खास याद राखजो मित्रों, जे शब्दनो विग्रह अनेथी थतो होय तो तेने समुच्चयवाचक द्वंद्व समास कहेवामां आवे छे। अने जे शब्दनो विग्रह वैकल्पिक एटले के अथवा अथवाथी थतो होय, शब्दनो विग्रह करो एटले वच्चे अथवा के आवतुं होय तो एने वैकल्पिक द्वंद्व समास कहेवामां आवे छे। पछी आपणे समाहार द्वंद्व समास। समाहार द्वंद्व समास कोने कहेवाय? तो जेनो विग्रह करता वगैरे शब्द आवे तो एने समाहार द्वंद्व समास कहेवामां आवे छे मित्रों, बराबर। त्यारबाद द्विगु समास। आना मित्रों उदाहरण डिटेल में आपणे लेक्चर में समझावेला छे। जो लेक्चर न जोयो होय तो खास करीने लेक्चर जोई लेजो। पछी आवे छे द्विगु समास। द्विगु समास में कांई याद राखवानुं नथी। शुं कहे छे के संख्या वत्ता समूह, कोई पण शब्द में आगळ संख्या देखाती होय ने पाछळ ए समूह होय तो तेने द्विगु समास कहेवामां आवे छे। नवरात्रिनो समूह, नव एटले के 9, रात्रि एटले नाइट, नवरात्रिनो समूह एटले एने कहेवाय द्विगु समास। हवे आपणे आजना समास में आगळ वधी रह्या छीए। मध्यम पदलोपी समास। केवो पदलोपी समास? मध्यम पदलोपी समास। तो शू कहे छे मध्यम पदलोपी समास में? के जे समास में पूर्व पद अने उत्तर पद, मित्रों शू कहे छे? जे समास में पूर्व पद अने उत्तर पद आपेला होय अने जो मध्यम पदनो लोप थतो होय, एटले के मध्यम पद निकळतुं होय अथवा मध्यम पद ने काढीने अथवा मध्यम पद थी कंईक नवो एनो मतलब बनतो होय तो ते समास ने मध्यम पद लोपी समास कहेवामां आवे छे। अमुक शब्दों में बंने पदों वच्चे विभक्तिओ पण आवेली होय छे। ने, नी, थी, मा ए विभक्ति छे, बधी आपणे भणीशुं पछी मित्रों। तो अमुक शब्दों में विभक्ति पण प्रकार जोवा मळे छे। तो अत्यारे मध्यम पद लोपी समास में शुं कहेवानुं छे के पूर्व पद अने उत्तर पद बे पद आपेला होय अने मध्यम पदनो लोप करता कंईक बीजुं पद मळतुं होय अथवा मध्यम पदनो लोप थईने एनुं वाक्य आखुं छूटुं पड़तुं होय तो तेने मध्यम पद लोपी समास कहेवामां आवे छे। तो मध्यम पद लोपीना समासना आपणे पूछायेला थोड़ा एक्जाम्पल आपणे लीधा छे। आम तो समास में जेटला एक्जाम्पल मित्रों लईए एटला ओछा पड़े, परंतु आपणे जे पूछायेला होय ए लेवानो प्रयास करीए छे। जे अमुक अल्टरनेट वारंवार पूछाता होय छे अने बीजुं खास तमारे अमुक शब्दोनो विग्रह खास याद राखवो ज पड़शे, एमां कोई लॉजिक लगाडवानुं थतुं नथी, केम के ए विग्रह याद राखो तो तमने 1 मार्क्स रोकड़ो मळे छे एटला माटे। तो शुं कहे छे? कपट निंदा। तो कपट करवा करेली निंदा एटले एने शुं कहेवाय? कपट निंदा। कपट करवा करेली निंदा एटले एने कहेवाय कपट निंदा। पछी शुं कहे छे? डोका बारी। तो डोकू काढी शकाय एवी बारी। बहु सामान्य छे, वच्चेना पदनो लोप करो अने तमे आंसर मेळवी शको छो मित्रों। गोळ पापड़ी, गोळवाળી पापड़ी। मित्रों शुं छे? गोळवाળી पापड़ी। धारासभा। धारासभामां शुं करवानुं होय मित्रों? धारो घडवानी सभा, एने कहेवाय छे धारासभा। महत्वाकांक्षा सेना माटे होय? तो महत्व प्राप्त करवा माटे कंईक आकांक्षा होय, कंई आशा होय तो एने महत्वाकांक्षा कहे छे। आगळ हाथ रूमाल एटले के हाथमां राखवानो रूमाल। तमने मित्र एवुं लागतुं हशे के आवा प्रश्नो पण दरेक मित्रों प्रश्न पूछायेला छे। खास याद राखी लेजो अने नोट्स बनावी लेजो।
પૂછાયેલા પ્રશ્નોમાંથી પણ ઘણીવાર પ્રશ્નો પૂછાતા હોય છે। આગળ વધીએ, મિલ મજૂર, મિલમાં કામ કરતો મજૂર। પછી શું કહે છે? ચ્યવનપ્રાશ એટલે કે ચ્યવન ઋષિ દ્વારા બનાવેલું પ્રાશ, ચ્યવન ઋષિએ અથવા ચ્યવન ઋષિ દ્વારા બનાવેલું પ્રાશ। શું કહે છે? રૂપરેખા, તો રૂપને દર્શાવતી રેખા એટલે કહેવાય છે રૂપરેખા। બહુ સરળ છે મિત્રો, એક વખત વ્યવસ્થિત સમજી લો તો તમને ક્યારેય ભૂલ પડશે નહીં। પ્રલય કેતુ એટલે કે પ્રલય આપનારું કેતુ। પાંજરાપોળ એટલે કે પાંજરાઓની પોળ, છે ને સરળ? પાંજરાપોળ, પાંજરું હોય એની પોળ હોય તો કે પાંજરાઓની પોળ। રણ સંગ્રામ, રણ સંગ્રામમાં શું કહેવાય? રણમાં ખેલાતો સંગ્રામ, રણમાં ખેલાવાનો સંગ્રામ। વસ્તી પત્રક, વસ્તી પત્રકમાં શું હોય? વસ્તી અંગેની માહિતી હોય, લોપ કર્યો અને એનું મિનિંગ મળ્યો આપણને, વસ્તી અંગે માહિતી આપતું પત્રક। દુઃખ વિજોગ એટલે કે દુઃખ આપનાર વિજોગ। તુલાદાન, તુલામાં બરોબર કરીને કરાતું દાન। પ્રૌઢ શિક્ષણ, પ્રૌઢ દ્વારા અપાતું શિક્ષણ। અમૃત જરા, અમૃતથી ભરેલી ઝારી। વિજય ધ્વજ, તો વિજય માટે ફરકાવેલો ધ્વજ, શું કહેવાય છે? વિજય માટે ફરકાવેલો ધ્વજ। લોહ પુરુષ કોને કહેવાય છે? લોખંડ જેવું મનોબળ જે ધરાવતો હોય એને લોહ પુરુષ કહેવામાં આવે છે। તો મિત્રો આ તમને થોડાક પૂછાયેલા પ્રશ્નો લાવવાનો પ્રયાસ કર્યો, તો બીજા પણ મિત્રો પ્રશ્નો આવશે આપણે પૂછાયેલા। આપણે અત્યારે શરૂઆતમાં કઈ રીતે આગળ વધી રહ્યા છીએ કે જેમ કે કોઈ સમાસ ચાલે છે તો એ સમાસના પૂછાયેલા પ્રશ્નો જ આપણે લઈને આવીએ છીએ, તો ખાસ મિત્રો એની તમે નોંધ કે નોટ્સ બનાવી દેજો અને આ રીતે તમે રોજ રિવિઝન કરજો। આપણે આજે 2 સમાસનું રિવિઝન કર્યું અને ત્રીજો સમાસ નવો શીખ્યા। આમ રોજ અલ્ટરનેટ 1-1, 2-2, 3-3 સમાસ લાવતા જઈશું અને સમાસનો લેક્ચર પૂર્ણ કરીશું। તો બન્યા રહો અમારી સાથે ગવર્મેન્ટ 360 સાથે। અને જો અમારા વિડીયો તમને સારા લાગતા હોય મિત્રો, અમારી મહેનત તમને ગમતી હોય તો તમે લાઈક, શેર અને ખાસ મિત્રો સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો, જેથી અમારા વિડીયો તમારા સુધી સમયસર પહોંચતા રહે। હું આપનો મિત્ર બ્રિજેશ, મળું નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં। જય હિન્દ।